Question 1. Universal Bibliographical Control is a program of Universal Bibliographical Control किसका एक प्रोग्राम है? FID, IFLA, UNICIST या ALA? The right answer is B. IFLA. Question number 2. RDA related to RDA किससे related है? Classification, cataloging, searching या browsing? The right answer is B. Cataloging. Question number 3. Which of the following is a tertiary source of information? निम्नलिखित में से कौन सूचना का तृतीय स्रोत है? जर्नल, बिब्लियोग्राफी, एनसाइक्लोपीडिया या बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज? The right answer is D. Bibliography of bibliographies. Question number 4. Number of states in India which have enacted public library legislation till date is. भारत में अब तक सार्वजनिक पुस्तकालय कानून बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 19, 14, 13 और 16? The right answer is A. 19. Question number 5. Which organization applied library and information policy in India at national level? किस संगठन ने भारत में पुस्तकालय और सूचना नीति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया? निस्सत, आयंसडॉक, यूनेस्को और RRRLF? The right answer is D. RRRLF. Question number 6. The term lexicography is associated with. lexicography शब्द किससे संबंधित है? Compilation of encyclopedia, compilation of handbooks, compilation of dictionaries या none of the above? The right answer is C. Compilation of dictionaries. Question number 7. Canon of characteristics are part of. Canon of characteristics किसका एक पार्ट है? Verbal plane, notational plane, idea plane और structural plane? The right answer is C. Idea plane. Question number 8. Which of the following is not true about e-journals? ई पत्रिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? They are distributed through digital methods. They also have editors or editorial boards. They are publication of serial nature or they are always free of cost. The right answer is D. They are always free of cost. Question number 9. A set of rules that govern overall data communication system is popularly known as. समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक समूह को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? प्रोटोकॉल, एग्रीमेंट, पैक्ट या मेमोरेंडम? The right answer is A. Protocol. Question number 10. Protocol means. प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? Interchange of data between two devices, interchange of data between two computers, linkage between two computers or linkage between two devices? The right answer is D. Linkage between two devices. Question number 11. Which of the following is not covered under intellectual property rights? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और थिजॉरस? The right answer is D. Thesaurus. Question number 12. Tagging in Web 2.0 application is called. Web 2.0 application में टैगिंग को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी, फॉक्सोनॉमी, सिंडिकेशन और डायरेक्टरी? The right answer is B. Foxonomy. Question number 13. What is the relationship between ISBD and cataloging codes? ISBD और cataloging code के बीच क्या संबंध है? They are not related at all. Cataloging codes will include bibliographic description. ISBD includes cataloging rules. या ISBD can replace cataloging rules? The right answer is B. Cataloging codes will include bibliographic description. Question number 14. Microchip was invented by. Microchip का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? Microsoft, IBM, Dell और Intel?
The right answer is D. Intel. Question number 15. What is bibliometry? Bibliometry क्या है? Function of library network, information management service, information management tool और library service.